Well, friends, today my first video on the chapter sets. Friend, what is set? What is set? You are already aware with sets. You know so many sets. You already know pen set, sofa set, and so many other sets also. What is set? First of all, I want to tell you. A well-defined collection of distinct object is called set. I want to tell you, friend, a well-defined collection of distinct object is called set. Means, friend, consider sofa set. How many person can sit? Only 5% can sit. In tea set, lemon set, only 6 glasses. In tea set also 6 cups. It means well-defined collection of object is called, set. Means, friend, if you are writing here set, then friend here a well-defined collection of objects, you can say friend distinct objects, so that collection of distinct objects is called set. Means, friend, collection of distinct object is called set. So many sets you already know. मैंने आपको इससे पहले बताया था कि means e and देखिए friends, well defined collection of object is called set, and each object is called element. Each object is called element of the set. Means, friend, here consider, and you can say, friend, each object is called element of the set. Each object is called element of the set. मतलब देखिए ये है कि जो आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाएंगे, तो जो हमारा वेल डिफाइंड collection of distinct object is called set, and each and every object is called element of that set. And friend, consider small a belongs to that set. It means consider any element in the set. It means you can say that element belongs to that set. After this, friend, I want to tell you how will you represent the set. Means I can say, friend, representation of a set. Representation of a set. Friends, you can represent this set in 3 ways. We can represent a set in 3 ways. Number 1, roster form. Whenever you will write all the elements within braces, means inside a curly bracket, separated by commas, then you can say roster form. Whenever you will take all the elements inside, curly bracket, separated by commas, you can say, means roster form. After this, friend, second representation of set, set builder form. Whenever you will represent this set by using a specific property, whenever you are representing a set by using a specific property, then you can say set builder form. And third, you can represent this set, by using Venn diagram also. We can represent this set by using Venn diagram also. In Venn diagram, what we'll do here, you will take a rectangle as a universal set and elements as a circle or ellipse. Means, friend, how can you represent a set? We can represent a set in 3 forms. First of all, number 1 is, friend, number 1, roster form. Number 2, I can say set builder form. And third means, friend, Venn diagram. देखिए होता क्या है कि कभी कभी MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट कैन डू मिस्टेक कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट. तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि इन 2 वेज दे आर थिंकिंग रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. देन यू आर रॉन्ग.
means you can represent set in three form. Number one, roster form. Number two, set builder form. Number three, Venn diagram. In roster form, all elements, what we'll do here? In roster form, all elements you will write in curly bracket, separated by commas. Consider 1, 2, 3, 4, 5, 5. And in set builder form, what we'll do here? Set builder form, you will write here x such that x is a natural number. X such that x is a natural number. Natural number less than 6. Means student, whenever you are representing this set roster form, then what we'll do here? Again, I'm telling you, each and every set you will represent by capital letter. Each and every set you will represent in roster form by capital letter. Sets always capital letter, and elements you can take in small letters. And in roster form, always whenever you will represent a set in roster form, then you can use curly bracket and separated by commas. But whenever in set builder form, what we'll do here, you will represent the set by using a specific property. Means a set which possesses a specific property is called set builder form. Means इसमें बहुत सिंपल सा है कि जब आप कोई सेट इस तरीके से लिख रहे हैं, then you can say roster form. Whenever you are representing in this way, consider x such that x is a natural number less than 6. Less than natural number 6, you already know 1, 2, 3, 4, 5. It means you are representing this set by a specific property. Then you can say set builder form. Whenever you are representing the set by within braces and separated by commas, then you can say roster form. And after this, one more form, number 3, Venn diagram. Whenever you will represent this set by using Venn diagram, then universal set you should denote by rectangle and set by circle. Inside in 1, 2, 3, 4 and 5, you can write in this way. Whenever you will represent this set by Venn diagram, then what will do here? You can take rectangle. That rectangle shows that universal set, and inside universal set you can take set A, set B, set C. So many sets you can take, no problem. Whenever you will represent the set in this way, तो देखिए we can represent the set in 3 ways. Number 1, roster form. Number 2, set builder form. Number 3, by using Venn diagram. तो अगर कहीं पर भी आपके MCQ क्वेश्चन आता है, how many ways we can represent a set, then easily you can give answer 3 ways. Please don't give answer 2 ways, क्योंकि mostly student का आंसर क्या होता है, wrong हो जाता है. And student, one more thing I am telling you. Means student, consider set A is equal to given here 1, 2, 3, 4, 5. Actually, this is element. Means student here, 1 is in this set. It means you can say 1 belongs to A. 2 is also in this set. It means 2 is the element of set A. It means you can write here 2 belongs to A. Similarly, student, 3 is in set A. It means you can write 3 belongs to set A. 4 is in set A, you can write 4 belongs to set A. 5 is in set A, then you can say 5 belongs to set A. But student, 6 is not in this set. It means you can write here 6 does not belong to set A. You can cut. 7 is not in this set. It means you can say 7 does not belong to set A. मतलब सीधा सा है, अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर होता है, then you can say whenever any element is inside this set, then you can say belongs to. And whenever any element is not inside this set, you can say that element does not belong to that set. It means here you can represent a set in 3 ways. Number 1, roster form. Number 2, set builder form. Number 3, you already know which form? Venn diagram. After this, friend, I want to discuss here types of set. Means friend, here I want to discuss here types of set. देखिए अभी मैंने थोड़ी पहले आपको बताया कि कोई भी सेट आपका है, how will you represent? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ,
You will represent this set always by capital letter, and this curly bracket very important. Consider this given A E I O U. ये क्या है? This is a set. You know which form? This is a roster form. A E I O U means student here you can say the set of vowels in the English alphabet, and this is this is a roster form. अगर आपको लिखना है set builder form में, then how will you represent? You can write here A is equal to curly bracket compulsory. Without curly brackets, set is wrong. And after this statement I am telling you X such that X is a set of vowels, set of vowels in English alphabet. In English alphabet. तो देखिए आपको क्या करना है, मीन्स स्टूडेंट हियर अगर आप whenever, again repeating, whenever you're presenting a set by a specific property, then you can say set builder form. After this friend I want to tell you types of sets. means friend here types of sets. तो in case of type of sets what is given? देखिए so many sets. देखिए जैसे कि आपका null set है, singleton set है, finite set, infinite set, equivalent set, equal sets, and so many other sets also. So that I am discussing here friend types of set. Number one I am discussing here friend, you can say null set, or you can say empty set, or one more name you can write set this also. देखिए सारा एक ही बात है, ये जैसे किसी इंसान के कई नेम्स होते हैं वैसे यहाँ पर अगर आप null set you are saying then also correct, you are saying empty set then also correct, if void set you are saying then also correct. Means a set which contains no element, a set which contains no element is called null set. Means you can write this print a set which contains no element is called null set. null set मतलब सीधा सा है, देखिए इस सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यू कैन से null set. It is represented by, you can write here student, it is represented by Greek letter phi, or in this way you can make this curly bracket here and no element inside this. We can represent a null set by Greek letter phi, or this with two braces you can make curly bracket, but no need to write any element whenever you are writing this. अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा. If I am telling you a natural number more than 4 and less than 3, not possible. If I am telling you a natural number more than 4 less than 3, not possible. So that you can write here this is a null set. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स स्टूडेंट again I'm repeating, a natural number, an even number which is divisible by, an even number which is divisible by 3, तो 3 से divisible हमारा कोई even number होगा स्टूडेंट? देखिए अगर ये एग्जाम्पल मैंने दिया है even number divisible by 3, तो ये null set नहीं है, क्योंकि अगर 3 से divisible हम नंबर ले रहे हैं तो हमारा 6 है, 12 है, ये even number है और ये divisible है, then it is not a null set. तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा. मीन्स अगर मैं ये कह रहा हूं कि an odd number which is divisible by 2, whenever I am taking example an odd number which is divisible by 2, this is an example of null set. बट अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं then you can check also. तो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया a natural number which is more than 4 and less than 5. तो अब देखिए कोई ऐसा नंबर है ही नहीं नेचुरल नंबर, तो उसके 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? कोई है नहीं. इसका मतलब क्या है? दिस इज ए नल सेट. आफ्टर दिस फ्रेंड यू कैन राइट हियर नंबर 2 सिंगलेटन सेट. सिंगलेटन सेट
What is singleton set here, student? Is set which contains only one element. Again, I'm repeating. A set which contains only one element. A set which contains only one element. A set which contains only one element is called singleton set. Is called singleton set. ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, यू कैन से सिंगलेटन सेट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हियर कंसीडर आई एम टेकिंग दिस वन, ये भी सिंगलेटन हो गया. इफ आई एम टेकिंग दिस सेट, देखिए इसमें क्या है, इन दिस सेट ओनली वन, सो दैट सिंगलेटन सेट. और ये भी देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. वेन एवर इन एनी सेट ओनली वन एलिमेंट, यू कैन से सिंगलेटन सेट. आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 3 आई वांट टू टेल यू फाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट के केस में क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूं. देखिए इन केस ऑफ फाइनाइट सेट, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट. ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट कंटेन्स, कोई भी आपका सेट है वो आपका फाइनाइट होगा वेन एवर यू कैन काउंट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स स्टूडेंट, वेन एवर एनी सेट गिवन and you can count the number of elements, you can say finite set. A set is called finite set if it contains no element or its element can be counted. मतलब देखिए कोई भी ऐसा सेट हो जिसमें या तो कोई भी एलिमेंट ना हो या तो कोई भी एलिमेंट ना हो, या आप क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड टिल सर्टेन नेचुरल, मतलब टिल ए सर्टेन नेचुरल नंबर n. तो फाइनाइट सेट में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार बच्चों को हो जाता है. जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि नल सेट है, तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया. या आपका ऐसा कोई सेट हो जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, यू कैन काउंट. मीन्स यू कैन राइट हियर सेट इज कॉल्ड फाइनाइट. ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट. A set is called finite if it contains no element. If it contains no elements. और देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, A set is called finite if it contains no element. अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे ये आपका नल सेट है, तो ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट. और इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, और its elements can be counted. फिर से बेटा समझ लो एक बार, again I'm repeating. A set is called finite if it contains no element or its elements can be counted till a certain natural number n. Till a certain नेचुरल नंबर n. मतलब सीधा सीधा है नेचुरल नंबर n. अगर आप किसी सेट के जो सर्टेन नेचुरल नंबर्स है वो n तक अगर आप काउंट कर सकते हैं, देन यू कैन से फाइनाइट. और आपका अगर नल सेट है वो भी, अब देखिए फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सपोज ये मैंने नल सेट लिया, ये भी फाइनाइट हो गया. अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. इफ कंसीडर 1, 2, 3, ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया. देखिए ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर विच स्टार्टिंग विद द लेटर जे, तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स है वो भी कैसा है, फाइनाइट सेट हो गया. अब इनफाइनाइट कैसा हो गया, इफ आई एम टेलिंग यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर मैंने जैसे 5 तक बोला है तो फाइनाइट है. इफ आई एम टेलिंग यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, दीज आर इनफाइनाइट सेट्स. अगर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो आपका फाइनाइट, नेचुरल नंबर लेस देन 100 फाइनाइट. इफ आई एम टेलिंग यू ओनली नेचुरल नंबर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. कई बार बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि वो फाइनाइट कब है और इनफाइनाइट कब है. अगर मैं कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 20 देन फाइनाइट. इफ आई एम सेइंग ओनली नेचुरल नंबर, देन यू कैन से स्टूडेंट दिस इज नॉट ए finite set, this is infinite set. Now student, I want to tell you infinite set. After this student here, types of set I am telling you. After finite set, infinite set. तो infinite set में क्या होता है देखिए, means student here
इनफाइनाइट सेट। देखिए जैसे इसके नाम में ही सब कुछ है, अगर आप नेम देखोगे तो इनफाइनाइट सेट में क्या गिवन है आपको खुद ही पता है, जो फाइनाइट नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। सो सिंपल। A set whose elements cannot be counted up to the natural number. A set whose elements cannot be counted up to any natural number. A set whose elements cannot be counted up to a natural number n is called infinite set। देखिए सीधी सी बात है, ये कैसा हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। और मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो अब देखिए सपोज इफ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स, then 2, 4, 6, 8 ... so on. In this way you can represent infinite set। अब देखिए नाउ स्टूडेंट इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देखिए थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं। इक्विवेलेंट सेट्स, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? तो देखिए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सेट, उस सेट में क्या बताया था, देखिए सपोज ये आपका सेट ए है, इसमें आपके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट? आप देखिए यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5। नो स्टूडेंट, इन दिस सेट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। then you can say here na is equal to 5 and this is called cardinal number। इसको समझ लीजिएगा, this is called cardinal number। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जो नंबर होता है दैट नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कंसीडर इन दिस सेट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। देन यू कैन राइट इन दिस वे na is equal to 5 and cardinal number of this set 5। consider here given set b is equal to 1, 3, 5, 6, 7, 8। then how many elements in this? 1 2 3 4 5 6। then nb is equal to, you can write here 6। मतलब ये जिस सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं यू कैन से कार्डिनल नंबर। इस सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन काउंट दैट विल बी कार्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर, अब ये मैंने कार्डिनल नंबर यहां डिस्कस क्यों किया, बिकॉज इन इक्विवेलेंट सेट होता क्या है कि आई विल कम व्हेनेवर आई विल एक्सप्लेन देन कार्डिनल नंबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए होता क्या इक्विवेलेंट, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements। means student you can say here two sets A and B are said to be equivalent if they have same number of elements। अब देखिए यहां पर क्या है, सपोज सेट ए आपका गिवन है ए ई आई ओ यू एंड सेट बी इज इक्वल टू गिवन हियर 2, 5, 3, 2, 4, 7। तो you spend what is here। अब जैसे सेट ए में देखिएगा, इन सेट ए हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। इन सेट बी हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। तो हियर स्पेंड na is equal to nb। therefore you can say a and b are equivalent sets। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, you see students, when you can take two sets। अगर आपको लग रहा है कि सेट ए में भी 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है,
इट इज नॉट ए मैटर कि वो एलिमेंट सेम है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट टू सेट्स में सेम है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से इक्विवेलेंट सेट्स। अब वही क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि आपका जो कार्डिनल नंबर है वो तो सेम होने ही चाहिए, बट नो स्टूडेंट जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सेम होने चाहिए। मींस टू सेट्स A and B are said to be equal if they have same number of elements, and elements तो सेम होने ही चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, all elements of set A must be in set B and all elements of set B must be in set A। मतलब देखिए सीधा सा है कि मतलब यू कैन से कि जो इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स में क्या होगा, देखिए जैसे सपोज ये आपका हो जाएगा मींस इक्वल सेट्स। अब जैसे सपोज सेट ए गिवन है, सेट ए आपका है ए बी सी डी। अब इसमें सेट बी गिवन है, सेट बी गिवन है सी डी ए एंड व्हाट इज गिवन हियर बी। अब सबसे पहले हमें इक्वल सेट्स को चेक करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू हियर इन केस ऑफ इक्वल सेट्स, यू नो स्टूडेंट, हम इसका चेक करेंगे कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं। जैसे Na4, Na में 4 एलिमेंट्स हैं, इन NB ऑल्सो 4। पहली कंडीशन तो यही होती है कि हम क्या चेक करें कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए क्या हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इन सेट B एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर इन सेट A। क्या सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है। अब देखिए A यहां पर भी है, A यहां पर भी है, B हियर ऑल्सो, C हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो D। तो वी ऑब्जर्व दैट नंबर 1 कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A एंड सेट B आर इक्वल, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इन सेट B and all elements of set B are also in set A, therefore you can say set A and set B are equal sets। तो देखिए in this way we can represent a set। अब देखिए now student intervals I want to discuss here, I want to discuss here student no intervals। तो intervals में होता क्या देखिए, देखिए अभी मैंने आपको types of set बताया, अभी मैं after this I will tell you subsets and after subsets intervals होता है, but right now I'm thinking first of all I will explain you intervals of a set। Till class 10th you are not, you know, you are not thinking regarding intervals, but today I want to tell you, you know, interval as a set of real numbers। Intervals as a set of real numbers, set of real numbers means student what is this। देखिए होता क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट था लास्ट ईयर, बिल्कुल आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा इन क्लास 9 सो मैनी ग्राफ्स ड्रॉन बाय यू, बट दिस ईयर आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट। अब होता क्या है, सपोज लास्ट ईयर आपको कहीं पर मिला हो x ग्रेटर देन 2, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। आपका क्या था देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज x ग्रेटर देन 2 गिवन और नंबर लाइन ये आपका 0 1 2 3 4 -1 -2। अब ग्रेटर देन यू नो 2 दिस, तो ये आपका ब्रैकेट हो गया। यहां से लेकर दिस साइड फुल नंबर लाइन इज कॉल्ड x ग्रेटर देन 2। तो होता क्या है कि ये जो ब्रैकेट अगर आप यूज करेंगे देन यू कैन यूज ओनली ओपन ब्रैकेट 2 to इंफिनिटी। अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स मींस स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, anyway given x greater than 2 it means you know this open bracket, इसमें 2 is not included। ये आपका कैसा रहेगा, ये ओपन रहेगा। बट स्टूडेंट एनीवे गिवन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट यू कैन ड्रॉ दी नंबर लाइन, कंसीडर 0 1 2 3 4 एंड दिस साइड -1 -2 -3, दिस मस्ट बी क्लोज्ड। ये कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड, एंड हियर दिस। अब इसमें क्या है देखिए, आपको जैसे कि क्लास 10th में कई क्वेश्चंस होंगे आफ्टर 2 एंड 2 से लेकर, मतलब दो बातें देखिएगा कि जैसे होता है कि इनिशियल नंबर मोर देन 2, देन यू शुड राइट हियर 3 4 5 6 7 8,
और अगर मैं कह रहा हूं कि ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब आप सारे नेचुरल लिखिए 2 टू इंफिनिटी, तो आप क्या करेंगे 2 भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेन एवर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। यहां पर आपको जो ब्रैकेट होगा वो आपको हो जाएगा 2 टू इंफिनिटी। मीन्स एनीवेयर दिस गिवन ओपन डबल 1,2, इसका मतलब सीधा सीधा है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, मीन्स 1 and 2 is not included. Whenever you will draw the graph, then you can write here 0, 1, 2, 3, and this side -1, -2, -3. This open bracket, this also open. तो 1 और 2 क्या होगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। But student, anyway given this close interval 1,2, then what is meaning of this? 1 less than or equals to x less than or equals to 2, and whenever you will draw the graph, then you can draw the graph in this way. This is 0, 1, 2, 3, 4, this is 2, और ये आपका कितना हो गया 3, this is here closed, ध्यान से देखिएगा closed। तो मतलब यहां पर क्या है कि whenever open interval given, जैसे ये आपका ओपन है, ओपन का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 2, मीन्स ओपन डबल में आपका ऐसा ब्रैकेट लगता है और उसमें 1 and 2 इज नॉट इंक्लूडेड। बट इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, आपका ऐसा ब्रैकेट होता है एंड दिस 1 and 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड ग्राफ ऑल्सो हियर। इन केस ऑफ ओपन इंटरवल दिस एंड दिस मस्ट बी ओपन। और अगर कहीं पर ऐसा है ओपन क्लोज्ड, कंसीडर 1 गिवन एंड दिस साइड 2 गिवन, दिस साइड क्लोज्ड, इसका मतलब है 1 लेस देन एक्स less than or equals to 2, and whenever you will draw the graph of this, then how will you draw, then 0, 1, 2, 3, this open and this must be closed, और ये -1 हो गया, here -2। if anyway given is print closed and open, then what is meaning of this, यहां पर आपको जाएगा 1 less than or equals to x less than 2, 4, 5, this side -1, this 1 must be closed and this 2 must be open. So student, from these graphs and these brackets try to understand, अगर greater than का साइन है इज इक्वल टू का नहीं है तो ये आपका कैसा होना चाहिए, ओपन। क्लास 10 पे नहीं ध्यान दिया, नो प्रॉब्लम, बट इन क्लास 11 यू शुड फोकस। इफ x ग्रेटर देन 2 तो 2 with 2 मतलब 2 onward, means this 2 is also included। और यहां पर क्या है कि 2 is not included after 2, और यहां पर क्या है ओपन डबल 1,2, it means this 1 and 2 is not included in this close interval 1,2। इसका सीधा सीधा मतलब है this 1 and 2 also included, 1 भी इंक्लूडेड है और आपका साथ में 2 भी है, बस इस ब्रैकेट में नहीं है। इन दिस ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड, तो ये 1 is not included but this 2 is included, this closed open, this 1 is included and this 2 is not included, means this point you can draw the interval in this way। और ये अगर हमें सपोज उस तरह लिखना होगा, सपोज इन सेट बिल्डर फॉर्म, देन व्हाट विल राइट हियर फ्रेंड, you can write here x such that x greater than 2 and you should write here x belongs to set of real numbers। Consider this you want to write, then you should write here x such that x greater than or equals to 2, x belongs to, you can write here set of real numbers। So in this way you can represent the intervals as a subset। तो subsets explain करने से पहले I was thinking I will explain you, I want to explain you intervals only intervals, and friend after this tomorrow I will explain you subsets and so many other things related to set tomorrow। one more time I want to tell you friend, आज जो मैंने आपको बताया है what, देखिए अगर आप देखेंगे तो what is given by me to you, number 1, always you will represent a set by capital letter and curly bracket compulsory whenever this you are writing 1, 2, 3, 4, 5, 6, whenever you are representing a set in this way, curly bracket you are using separate and all the elements separated by commas। one more time I am telling you, set always by capital letter, elements by small letter, curly bracket compulsory, all elements separated by commas, then you can say roster form।
कौन सी फॉर्म बताई थी अभी थोड़ी देर पहले? रोस्टर फॉर्म, ROSTER। बेटा ROASTR नहीं है, दिस इज ए रोस्टर फॉर्म, मींस टेबुलर फॉर्म यू कैन से। सेकंड यू नो सेट बिल्डर फॉर्म, देन you should write here this to capital letter x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? x less than or equals to 6। whenever you are representing a set by using, थर्ड मैंने बताया था Venn diagram, whenever you will take universal set as a rectangle and all elements as a circle or ellipse, you can say Venn diagram। and after this I am discussing here, friend, consider 1 is in this set, it means you can say 1 belongs to A, 2 belongs to A, you know 2 belongs to A। 7 is not in this set, it means 7 does not belong to set A। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है, you can say belongs to। if element is not in that set, you can say that element does not belong to। and after this, friend, what is discussed by me here? Types of sets। types of set means number 1 null set, a set in which no element, you can say null set, it is represented by phi or only curly bracket। after this types of set में मैंने बताया था, after this singleton set, a set in which only one element, you can say singleton set। after this finite set, a set which contains no element or you can count the elements of that set till natural number n, you can say finite set। a set in which you cannot count the number of element till the natural number n, you can say infinite sets। इसके बाद में मैंने बताया था equivalent sets। equivalent set means friend, two sets A and B are given, if number of elements both sets are equal, then you can say equivalent sets। after this मैंने डिस्कस किया equal sets। in case of equal set, cardinal number must be same। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट A और सेट B दोनों में इक्वल होना चाहिए, बट एलिमेंट सेम है नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज सेट ए में 4 है तो सेट बी में भी 4 है, सेट ए में 5 है तो सेट बी में भी 5 होना चाहिए। एंड इक्वल सेट्स में क्या होता है? मींस फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल नंबर मस्ट बी सेम, दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम होना चाहिए एंड जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, तभी यू कैन से इक्वल सेट। इसके अलावा मैंने आपको इंटरवल्स बताया था एंड टुमारो आई विल डिस्कस हियर सब सेट्स। थैंक यू and have a nice day।